A very good morning to all of you. Welcome to the another sub lecture of metals and non-metals. So dear students, today we will start up with the ionic compounds. What are the ionic compounds? What are its properties? Along with the examples. So let's find out what are the ionic compounds. Ionic compound is a simple chemical compound in which the ions are held together in a lattice structure by ionic bonds. Ions in the ionic compounds are held together by the electrostatic force between oppositely charged bodies. They are formed by the transfer of electrons from one atom to the another. The ionic compounds are made up of positively charged ions, which are called as cations, and the negatively charged ions, which are called as anions. That is, the ionic compounds consist of ions and not the molecules. Now, coming to the properties of ionic compounds, let's find out the important properties of ionic compounds. First and foremost is ionic compounds, they are usually crystalline solids. For example, sodium chloride is a crystalline solid. The ionic compounds are solid because their oppositely charged ions attract one another strongly and form a regular crystal structure. The crystals of ionic compounds are hard and somewhat brittle. Ionic compounds have high melting and boiling point. For example, take the example of the sodium chloride. It has high melting point and high boiling point. High melting point of 800 degrees Celsius and high boiling point of 1413 degrees Celsius. The ionic compounds are made up of positive and negative ions. There is a strong force of attraction between the oppositely charged ions, so a lots of heat energy is required to break this force of attraction and melt, or somewhat you can say, boil the ionic compound. Due to this, the ionic compounds have high melting as well as the high boiling point. Third property is this, that the ionic compounds are usually soluble in water, but they are insoluble in the organic solvents. Likewise, alcohol, benzene, kerosene, ether, or acetone. For example, sodium chloride, it is soluble in water but insoluble in the organic solvents like benzene, kerosene oil, etc. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or when melted. This means that ionic compounds are electrolytes. They conduct electricity because they contain charged particles called ion. Now let me show you the demonstration of the properties of the ionic compounds. We will first of all take the example of this sodium chloride as the ionic compound in my experiment. The first property is that the property of ionic compounds that they have high melting as well as the boiling point. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है. हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे एक मेटल स्पैचुला पे. लुक एट द डायग्राम, जो मैंने यहाँ डायग्राम दिखाई है आपकी स्क्रीन पर. उसके बाद हम उसको डायरेक्टली हीट करेंगे ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, और उसके बाद व्हाट विल वी सी, हम क्या नोटिस करेंगे, जो सोडियम क्लोराइड है दैट डज नॉट मेल्ट इजीली. सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. दिस शोज दैट सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. दूसरी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की है, द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स that they are soluble in water but insoluble in inorganic solvents. Now एक और एग्जाम्पल मैं इसकी आपको देती हूँ. हम क्या लेंगे, थोड़ा सा पानी एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हम पिंच सोडियम क्लोराइड का डालेंगे, फाइन. उसके बाद हम शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को. व्हाट विल वी सी, हम नोटिस करेंगे जो सोडियम क्लोराइड है वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा पानी में. अब क्या हम करेंगे, हम दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड डालेंगे, लेकिन उसके साथ हम उसमें कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर है, कैरोसिन है, वो डालेंगे. उसके बाद हम देखेंगे, हम शेक करेंगे ट्यूब को, हम देखेंगे जो सोडियम क्लोराइड है वो नीचे डिपॉजिट लेयर में बना होगा. मीन्स वो डिजॉल्व नहीं हो गया होगा ईथर में. इट विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज सच. दिस शोज दैट द सोडियम क्लोराइड, जो कि आयनिक है कंपाउंड, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, द इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. फाइन. एक और प्रॉपर्टी जो है कि property of ionic compounds that they conduct electricity when dissolved in water. Look at the figure. देख लीजिए यहाँ पर एक और सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल है कि वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. हम फिल करेंगे एक बीकर हाफ विद वाटर एंड डिजॉल्व सम सोडियम क्लोराइड इन इट. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दो कार्बन रॉड्स लेंगे या इलेक्ट्रोड्स लेंगे जो कि ग्रेफाइट के बने हैं, और हम उनको रखेंगे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में जो कि बीकर में है. Any electric circuit is then set up by including a battery, bulb and a switch. Now उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्विच जो है ऑन करेंगे, एंड ऑन प्रेसिंग द स्विच
हम देखेंगे जो बल्ब है दैट लाइट्स अप एट वंस। इसका मतलब है जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है विच वाज टेकन इन अ बीकर दैट अलोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। यहाँ आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। Since sodium chloride is an ionic compound, that means we can say that ionic compounds conduct electricity when they are dissolved in water.